two models कर चुके. ठीक है. What is autocratic model? What had we discussed? What was the discussion done in our last class? What is autocratic model? Huh? You need to turn on your camera first. All of you need to turn on your camera. Camera on है मैम. नहीं, बहुतों का नजर आ रहा है कि ऑन नहीं है. Yeah, what is autocratic model? I want Nidhi, you to answer. Roll 46. Just unmute yourself. It goes the manager and power to dictate and forms decision while making employee obey their order. Yeah, it. What you said? Repeat your line. Repeat your line. It was a started period of revolution. You don't need to read out anything. What have you understood from that point? You need to say that. Nidhi, turn on your camera and say. Ma'am, camera on है. अब तो दिख ही नहीं रहा. It is showing that your camera is off. Now say. Now it is on. बोलना है autocratic model. Yes, ma'am. Manager will do work. Manager will do work. नहीं ma'am. Manager will do all the thinking work and employee execute. Okay. Anything else? Yeah, correct. Just thinking part will be done by managers and employee have to obey those orders. Okay, that was autocratic model. मतलब leader order देंगे और सारे employees को follow करना है. Neither there is any means it actually it is compulsion or on employee that yes you have to follow. ठीक है, एक तरीके से ये compulsion का ही काम कर रहा है. इसके अलावा और एक ही पर्सन सारा डिसीजन लेता है. क्या चीज? मैम एक ही मतलब पर्सन जो होता है वही डिसीजन सारा लेता है, कंट्रोल. हाँ, तो ठीक है, ये था आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल. व्हाट वाज कस्टोडियन मॉडल? अनीशा, कस्टोडियल में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कैसे इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे? Yes, ma'am. It was a little bit in improvement side as compared to autocratic model. Means here the employee also have some right to take decisions or work on the decisions made by the manager or the employee. Okay, other than that, we were also talking about security of employees. Yes. Yes. And third model we had discussed, or we have to discuss now? Supporting No, ma'am. model. We have to discuss. We have to discuss. At least I've explained that here what we are focusing on employees motivation. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि employees already motivated रहेगा. यहाँ पे ना हम autocratic model को follow कर रहे हैं, ना हम security की बात कर रहे हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं employee की motivation की. ठीक है, एक भी पॉइंट लिखवाया था मैंने सपोर्टिव में? No, ma'am. No. तो सपोर्टिव में पहला पॉइंट ये लिखिए, unlike the two previous approaches, unlike the two previous approaches, basically two है ना, two previous approaches, the supportive model emphasize on motivated and aspiring leader. Okay, second point, motivated and aspiring leader. Aspiring leader. First we are talking about leader and then we will come to employee. तो आपके लीडर जो हैं वो सबसे पहले मोटिवेटेड और एस्पायरिंग होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, देयर इज नो स्पेस फॉर एनी कंट्रोल. देयर इज नो स्पेस फॉर एनी कंट्रोल और ऑथोरिटेटिव पावर.
or authoritative power in this model or on the incentive or reward scheme. Okay, in second model, what we discussed about incentive and reward scheme, that is the point we are writing, that in this model, neither we talk about any control or nor we talk about any incentive or reward. Have you completed or should I repeat again? Completed, ma'am. Chandan? Ma'am, Completed, ma'am. repeat, please. Oh, what is Ma'am, your repeat. name? Chandan Kumar, right? Roll number 52. 52. Yes, ma'am. You have completed? Yes, ma'am. Okay, then. Let me Ma'am, repeat. repeat, please. Okay. I told there is no space for any control or authoritative power in this model or on the incentives or reward scheme. Okay. Authority power का मतलब What, Abhinav? authority power मतलब है समझे? Authoritative power in this model Yes. or on the incentive or reward scheme. Done. So here in this point, we talked about what is not in this model. So what is in this model? In this model, we are talking about motivation of staff. So write down in next point, it is simply based on motivating staff through the establishment of the manager and employee relationship. Based on Motivating staff through the establishment of manager and employee relationship. And the treatment that is given to employee on daily basis. So as the name suggests, supportive. So here we are focusing on motivating the staff, and also we are talking about relationship between manager and employee. If the relationship will be good, then obviously they will feel belongingness and they will work towards the organization. All right. So this was second point or third point. Third point. Ma'am, third point. Next Third point, point, ma'am. create a positive workplace. To keep the employee self-motivated. Okay. So again, next point what we talked about, also to create positive work environment, motivate employee, have a good relationship with your employee, and again, create a positive work environment, workplace. All right. Next, you have to write a classic example is Hawthorne experiment, HOW. मैम क्रिएट इससे पहले वाला पॉइंट Create a positive workplace. Okay, classic example is Hawthorne, HOWTHORNE, Hawthorne experiment, which conclude that organization is a social system. Where workers are important
where worker are important element of the system. Where worker are important element of the system. ओके वैसे तो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट हम लोगों को डिटेल में आगे चल के पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर वर्ड आया तो ब्रीफ कर दूं. एक्चुअली ये हॉथर्न एक्सपेरिमेंट जीई करके, जनरल इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी थी पहले, ठीक है. वो एक एक्सपेरिमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में की, बहुत लो प्रोडक्शन हो रहा था, तो रीजन जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रखा गया. एक या 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देखा गया. लाइक सबसे पहले फिजिकल एम्बायंस को थोड़ा कम करने का कोशिश किया, लाइक डीम लाइट कर दिया गया, ठीक है, वो चेक करने के लिए कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे, ठीक है. उसके बाद फिर एट लास्ट फिर रिले एक्सपेरिमेंट था, ठीक है. फिर अलग अलग करके देखा गया. फिर लास्ट में सबको एक जगह करके देखा गया कि सब लोग अगर अपना मतलब सोशली कनेक्टेड हैं या एक दूसरे को जानते हैं या फ्रेंड ही है सब लोग आपस में, तो कैसा वर्क इन्वायरमेंट होता है और कैसा प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है. तो लास्ट में कंक्लूड किया गया था एक्सपेरिमेंट से कि फाइनली जो सोशल सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल सिस्टम, सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है. इसके अलावा अलग से क्वेश्चन बनेगा और आगे हम लोग जब अपना सिलेबस लेके जाएंगे और डिटेल में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था. हॉथर्न एक्सपेरिमेंट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था, ठीक है. वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. फाइन, अभी बस इतना जान लीजिए कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था और फाइनली निकल के यही स्टेटमेंट आया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे जो भी वर्कर हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिस्टम के, इसीलिए उनको बिलोंगिंगनेस फील करवाइए, उसका थोड़ा जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाइए, और आप बिलोंगिंगनेस शो करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, इंक्रीज होगा. फाइन, अब आगे बढ़िए. ग्रुप डायनामिक्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप डायनामिक्स and supportive supervision are better result. Okay, so this was all Group dynamic. Group dynamic and supportive supervision give better result. So this is all about supportive model. Now let's switch to collegial model. Collegial तो थोड़ा बहुत कॉलेज टाइप फीलिंग नहीं आता, कॉलेजियल हम लोग बोल रहे हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है. पहले में हम लोग पावर दिखा रहे थे, बॉस पावर दिखा रहे थे, है ना. सेकेंड मॉडल में क्या हो रहा था, हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. थर्ड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की, रिलेशन बिल्डिंग की. और यहाँ कॉलेजियल मॉडल में हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, ठीक है, बॉस भी मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो कॉलेजियल जैसे नाम है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, जैसे कॉलेज में हम लोग सब लोग एक जगह बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो सेम वे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है. ओके, तो इस मॉडल में इस चीज को फोकस किया गया. तो राइट डाउन, कॉलेजियल स्पेलिंग इज क्लियर टू यू ऑल, COLLEGIAL, collegial model. Write down, in this scheme the structure of an organization is developed in a way that there is no boss, nor subordinates, but सबऑर्डिनेट मतलब बॉस के नीचे काम करने वाले जो होते हैं उसको हम लोग सबऑर्डिनेट बोलते हैं. तो वही लिखा हुआ है, नो बॉस नॉर सबऑर्डिनेट. हो गया, नॉर बॉस नॉर सबऑर्डिनेट, बट ऑल आर कलीग्स. वेट अ सेकेंड सर, हैव यू जॉइन्ड अ व्हाट? कैन यू हियर मी? I can see one more name over here. Okay, ma'am, I have already logged in now. Okay. Okay, so it's almost 11:42. Time, ma'am? I don't think we have time left. Have you talked from Priyanka, ma'am? She said that let me check with Neha, ma'am. So
Actually, after 12, I am not free. So Can we keep this demo? Today is Monday, right? On Wednesday, will it be possible, sir? okay.